So to improve this colligative property, इस colligative property को एक तरह से ठीक करने के लिए Van't Hoff factor is given, Van't Hoff factor introduce किया गया. Okay, so Van't Hoff factor is telling what, if dissociation or association occurs then quantity of solute changes. जब dissociation या association होता है तो quantity of solute क्या हो जाता है, बदल जाता है. Understood? या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है. It increases or decreases. So what is happening? If colligative property, if quantity of solute change, then the value of colligative property will also change. Yes, okay. So it means the theoretical value is different than observed. For example, I am explaining you, जैसे NaCl है, NaCl is dissociating. Okay, ये अच्छा मतलब पानी में डालने से डिसोसिएट होता है, इसका ऐसा ही नेचर है इस इलेक्ट्रोलाइट का. ओके, व्हेन इट इज़ डिसोसिएटेड, इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू Na+ एंड Cl-. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये T0 टाइम पे कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो 1 मोल हमने डाला. नाउ एट टाइम T पे जब हमने पानी में घोल दिया इसको, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl-. सो what was our theoretical value? Our theoretical value was what, 1 mole, but observed is what, 2 mole. Understood? So this is creating a problem na, this is a difficulty that the observed value is differ than the theoretical value. Observed हमने सोचा था 1 mole डाला है तो हमारा रिजल्ट भी 1 mole के रिस्पेक्ट में ही आएगा, बट आवर रिजल्ट इज with respect to 2 mole. The colligative property changes which is with respect to 2 mole. Okay, so now Van't Hoff factor is giving a relation between observed value and theoretical value. Okay, observed value and theoretical value. So we can calculate this by a factor. To calculate this, a factor is given, that is Van't Hoff factor. What is that is Van't Hoff factor. Okay, it means I is equal to observed colligative property upon theoretical colligative property. Observed colligative property upon theoretical colligative property. In case of NaCl, you can see that in case of NaCl, what is happening, our observed colligative property is what, our observed colligative property is 2 and our theoretical colligative property is 1. Okay, so here we are calculating in case of NaCl, in case of NaCl we are calculating. Okay, I is what, observed, observed means this is observed. Okay, this is observed. I is 2, observed 1, and theoretical one is what, theoretical one is 1. Okay, so I is equal to observed upon theoretical colligative property. So this is 2 by 1. Okay, so we are getting the answer 2, I is equal to 2, which is obviously greater than 1. So we can say that in case of dissociation, I will be greater than 1, I will be greater than 1 in case of dissociation. Understood? Okay, so I am reading the whole. If dissociation or association occurs, then quantity of solute changes. You can see these are the changes. Okay, it means theoretical value is different than observed. ठीक है, is different than observed. For example, in case of this NaCl, what is happening, Na+ and Cl- is dissociating and I is equal to observed upon theoretical, that is observed one is, your observed one is this one I think. Okay, your 2 mole is observed and your theoretical one is this one. So we had done 2 upon 1, that is 2, and I is greater than 1 in case of dissociation. Okay, but in case of association, you can see like this is acetic acid in benzene. Okay, acetic acid को benzene में हम घोल सकते हैं. तो जब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया तो ये डाइमराइज हो गया. ठीक है, डाइमराइजेशन हो गया मतलब एसोसिएट हो गया. डाइमर मतलब कि 2 मॉलिक्यूल आके आपस में जुड़ जाना. ओके, डाइमर्स. ओके, डाइमराइजेशन मीन्स 2 molecules are joining, 2 molecules are joining. Okay, joining. So दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक डाइमर फॉर्म कर लेते हैं. लाइक दिस इज CH3COOH एंड दिस इज CH3CO
OH. ओके, दिस फॉर्म्स अ डाइमर एंड जॉइंड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यू हैव गिवन 2 मोल एंड you got 1 mole, means your observed one is 1 and your theoretical value is 2. So you will get the answer is 0.5, that is I is less than 1. So we can make a table. Okay, we can summarize this in the form of a table, like you can see NaCl. In case of NaCl, dissociation is there. Dissociation means your I is equal to observed upon theoretical, that is 2 upon 1. Okay, so I is what, I is 2. Okay, which is more than 1. So we can write I is more than 1. I am explaining this quantity of solute, colligative property, molar mass and your I. Okay, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ डिसोसिएशन के केस में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो बढ़ गया एज व्हेन 1 मोल इज एडेड इट डिसोसिएटेड इनटू 2 मोल, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस, Na का 1 मोल और Cl का 1 मोल. ओके, सो क्या हुआ, हमारा डिसोसिएट हो गया क्वांटिटी ऑफ, हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है. तो ये क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट तो बढ़ गया डिसोसिएशन में, अंडरस्टूड, इट इंक्रीजेस. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गया. लेकिन मोलार मास क्या हो गया, वो घट गया. मोलार मास घट गया कैसे, बिकॉज क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल 2 में टूट रहे हैं, एक मॉलिक्यूल क्या होगा 2 में टूट रहे हैं, तो पहले जितना मोलर मास था अब कम हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज स्प्लिटिंग. ओके, सो मोलर मास इज डिक्रीजिंग एंड यू नो दैट वी हैड कैलकुलेटेड I is greater than 1. ओके, नाउ एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन वी हैड सीन द एग्जाम्पल CH3COOH व्हेन डाइमराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेंजीन. ओके, सो क्या हुआ, डाइमराइज हो गया और इसमें क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, जब 2 मिलके 1 बन जाएंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी डिक्रीज, दैट इज it is decreasing. Okay, amount of solute, quantity of solute is decreasing. Colligative property is directly proportional to the quantity of solute, so it will also decreases. Understood? Molar mass will increase because 2 small molecules are joining to form a big molecule. Okay, it is forming a big molecule, so molar mass will increase. Okay, and I will be what, less than 1. We had calculated I is equal to what, it is less than 1. Okay, it is less than 1. Okay, so you can also make this table like this. Okay, now one more thing, as you know, I is observed colligative property upon theoretical colligative property.